बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फ़िज़िक्स टेस्ट नंबर 3 की, जो कि जीडीपी और एएफएनएस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये जीडीपी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एएफएनएस में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जीडीपी में कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। इनमें सोचने की ज़रूरत होती है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ लिंक किया हुआ होता है और इसमें आपको जो है वो टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पर सोचें। So you should have a trained mind to solve such type of questions. So let's start the test. The question number 1 is, two light rods are connected with a short light rod about common axis, have a radius r and horizontal table top connected to a spring constant k. The cylinders are pulled to the left by X and released. There is sufficient friction for the cylinders to roll. Find the time period of oscillations. A uniform rod of length L, mass m, is fixed at the center A. Spring of spring constant K is connected to rod and wall. The rod is displaced by small angle theta and released. Find time period or oscillations. A point moves in the xy plane according to the law x is equal to a sine omega t. The particle has a trajectory. A solid ball of mass m is allowed to fall from a height h to a pan suspended with a spring of spring constant k. Assume the ball does not rebound and pan is massless. Then amplitude of the oscillation is. A, B, C are identical springs, each of spring constant K. Mass is displaced slightly along C and release. Find the time period of small oscillations. Two rods, one of aluminium and other of steel, having initial lengths L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansions of aluminium and steel are alpha A and alpha S, respectively. If the length of each rod increases by the same amount when the temperature is raised by T degrees Celsius, then find the L1 by L1 plus L2. And the last one, a thermally insulated vessel contains two liquids at room temperature T1 and T2 respectively, and specific heats C1 and C2 separated by a non-conducting partition. The partition is removed and the difference between the initial temperature of one of the liquids and the temperature T stabled in the vessel turned out to be equal to half the difference between the initial temperature of the liquid. Determine the ratio m1 by m2 masses of the liquids. ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं और इनको जो है वो सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाई जाएगी और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है वो एक एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाई जाएगी और सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।